Hi students. So in this we are studying the chapter second, the origin and the evaluation of the earth. इस चैप्टर जो ये सीरीज वीडियो इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब किस तरह से अर्थ का ओरिजिन हुआ, मतलब किस तरह से उसका पैदा हुई और किस तरह से वह आज की जो फॉर्मेशन है, जो आज का जो लैंडस्केप है, जो अर्थ है, उस कंडीशन में या उस स्टेट में किस किस स्टेज के थ्रू गुजरती हुई आई और वो यहाँ तक कैसे पहुंची। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम ज्योग्राफी करें, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी मस्ट नो how the earth was originated and what were the various changes which took place over the time. So we have already studied about the one theory which explains the universe, which explains that how the earth is formed and how the earth and the other stars and the planets were formed. That was the early theories, and those were considered as the early theories. And after them, there was the one theory that was called the nebula hypothesis. In this theory, it explains that all the means in the at the earlier stage, the all the planets and the sun or the stars were in the were the cloud of the gases, and over the time the gases separated and the solid particles separated, and they divided into the way to form the various stars and the planets. Now today we will study about the some modern theories. There are some modern theories of the origin of the earth, universe, earth and the universe. So the first means the first thing is the origin of the universe, means how the universe, in which the earth is the part of the universe, so how it was, means how it took place, how the universe was originated. So this theory, there is the one theory that is known as the Big Bang theory. And this is the popular argument and this is the popular theory, and you must keep in mind that all these theories are based on the estimations and some evidences available, because none of these theories are verified, means they are not, they are on the basis of the various small evidences available in the nature and some of the estimates and the arguments given by the various geographers and the scientists. So the first theory, जो पहले जो modern theories में जो first theory है वो है Big Bang theory. According to this theory, it is also known as the expanding universe theory or expanding universe hypothesis. This theory or this Big Bang theory is also known, उसको हम एज expanding universe theory के नाम से भी जानते हैं. So this theory Edwin Hubble in 1920. जो Edwin Hubble was one of the scientists. So he in 1920 में उसने कुछ evidences provide किए जिससे कि that he said that the universe is expanding. Universe means the including the galaxy, all the galaxies they are expanding. मतलब उनके अंदर वो expand हो रहे हैं, उनके अंदर वृद्धि हो रही है, वो बढ़ रही है. So he gave some evidences. उसने इसके बारे में कुछ evidences दिए. As the time passes, galaxies, according to this theory or according to the this expanding universe theory, as the time passes, the galaxies move further and further apart. जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, उसके उसी के साथ में ही जो गैलेक्सीज हैं, जो यूनिवर्स के अंदर कई सारी गैलेक्सी है, वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच में उनका डिफरेंस, जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, वो एक दूसरे से ज्यादा दूर जाती जा रही है. यू कैन एक्सपेरिमेंट, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्या है. तो एक एग्जांपल में यहाँ पे आप बताता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, सो let's take the
let's have one experiment to understand the expanding universe hypothesis. So in this, we are just taking the balloon and mark some points on it to represent the galaxy. Suppose there is the balloon. ये हमने एक बलून लिया है और इसके ऊपर ये कुछ गैलेक्सीज हमने मार्क की हुई है। तो जो ये डॉट्स हैं हमें मान लेते हैं कि जो डॉट्स बने हुए हैं इस पे या जो इस पे मार्क्स बने हुए हैं ये गैलेक्सीज हैं, ये गैलेक्सीज को मार्क करता है। और जो पूरा का पूरा बलून है एक यूनिवर्स है। तो एज पर द expanding theory it is said that the galaxy means the universe is expanding and the distance between the various galaxies is also means expanding. So let's see if suppose this is the balloon and we start एंड इन्फ्लेटिंग इट, हम इसको बलून को फुलाना शुरू करते हैं। तो अभी ये गैलेक्सीज बनी हुई है, जैसे जैसे हम इसको फुलाएंगे तो बलून क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। बलून बड़ा होएगा तो जो इसके बीच की जो गैलेक्सी है, सपोज हम ये दो मार्क कर रखा है, इसको आप ध्यान से देखें, जो दो गैलेक्सी दो ग्रीन लाइन से मार्क है, ये दो गैलेक्सीज है। अब अगर ये बड़ा है तो इस तरह से इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये देखिए इट इज एक्सपेंडिंग, जो डिस्टेंस है इनके बीच का गैलेक्सीज के बीच का वो बढ़ता जा रहा है। तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो पहले कम था, और लेकिन जैसे जैसे ये इनका एक्सपेंड हुआ, बलून को हमने फुलाना शुरू किया तो वह बढ़ता गया। साथ में एक इसके साथ में एक चीज ये भी हुई कि जो गैलेक्सीज की देखो, अगर आपको कैसे पता चलेगा, अब देखिए, अब देखो ये कितना सा डिस्टेंस, कितना सा आपको डिस्टेंस दिख रहा है इन दोनों के बीच में। और अगर हम इसको फुलाना शुरू करते हैं, एक्सपेंड करना शुरू करते हैं इसको, तो ये आपको बढ़ता ही जाएगा। ये आपकी जो डिस्टेंस इनके बीच की, ये दो गैलेक्सीज के बीच की कहाँ गई, ये डिस्टेंस आपको बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एक्सपेंड हो रहा है, बलून फूल रहा है, बलून मतलब एच गैलेक्सी जो हमने, सॉरी यूनिवर्स, पूरे बलून हमने बलून को क्या माना है, यूनिवर्स, और इसके ऊपर जो डॉट्स है इनको हमने गैलेक्सीज माना है। तो जैसे जैसे बलून फूलेगा मतलब गैलेक्सीज एक्सपेंड होएगी, तो उसके गैलेक्सीज एक्सपेंड हो रही है तो साथ में मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो गैलेक्सीज के बीच की जो डिस्टेंस बढ़ रही है, साथ में जो गैलेक्सीज की साइज है, अगर इसमें देखते हैं आप, देखो अब ये डॉट्स की साइज बिल्कुल छोटा है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेंड होता है मतलब बलून फूलता है तो इसके गैलेक्सीज की साइज भी बढ़ती जा रही है। तो ये एक एक्चुअली दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट एग्जैक्ट बिकॉज as per the expanding universe theory, it says that only the distance between the galaxies is expanding or it is increasing, not the size of the galaxy। जो एविडेंसेस अवेलेबल है वह इस चीज के एविडेंस तो अवेलेबल है कि जो गैलेक्सीज के अंदर के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन गैलेक्सीज की साइज बढ़ती नहीं जा रही है। लेकिन जब हम बलून वाला एग्जांपल लेते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि डिस्टेंस तो दो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, साथ में जो गैलेक्सीज की साइज भी बढ़ रही है। दैट्स व्हाई दिस so the balloon example or this example is partially correct. We cannot say that this example of the this experiment of the balloon is exact, but we can have the idea that how means what is the expanding universe theory or the hypothesis। तो इससे होता है क्या समझे आप कि जैसे गैलेक्सी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होता जा रहा है और उसके साथ में जो गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एक्सपेंड होता जा रहा है, एंड देयर आर द सम एविडेंसेस ऑफ दिस, इसके कुछ एविडेंसेस भी है। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपना बिग बैंग थ्योरी। व्हाट इज द बिग बैंग थ्योरी? द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेजेस, और जो बिग बैंग थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसके 3 स्टेजेस है। There are the 3 stages, मतलब किस तरह से हुआ, how did the Big Bang theory happened or how did it took place। The first one is the you can in the help of this picture you can see there are the some there are the 3 stages. First one, there is the one point that is the singularity, it is known as the singularity. Then
it expanded, then again expanded, and it keep expanding. So this is the Big Bang theory, or it is the universal expanding universe hypothesis. सो अगर इसके हिसाब से क्या हो, किस तरह से एक्सपेंडिशन शुरू हुआ, कहाँ से इसका बिगनिंग हुई, तो सबसे पहले कितना छोटा था, फिर कितना, कब कितना बड़ा हुआ, तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ने जा दे रहा होता। थ्री स्टेजेस, इसकी टोटल थ्री स्टेजेस था। फर्स्ट से in the beginning, all the matter forming the universe existed in one place in the tiny ball. सबसे पहले जो मतलब at the before the universe was formed or universe originated, all the matter all the matter which forms the universe today, it was a tiny ball, or it was like a tiny ball, or it was a singular atom with an inimaginable वॉल्यूम, और उस जो टाइनी बॉल की थी उसके unimaginable volume, it has the means unlimited volume, there were infinite volume, and it has the infinite temperature and infinite density, means it was so dense, its temperature also infinite. So it was before the Big Bang theory. And at the Big Bang, the tiny ball exploded, and when the Big Bang took place, जब Big Bang हुआ, तो the tiny ball exploded violently. It exploded with the great energy and with the great effect. So this led to the whole huge expansion, और इसकी वजह से क्या हुआ, huge expansion, that energy which was trapped in the tiny ball, all the matter and the atoms which was trapped in the tiny ball expanded, and it is now generally accepted that this Big Bang took place 3.7 billion years before the present, and you can see the time. It is the huge immense time, even we cannot imagine कि कितना लंबा टाइम हुआ हो, इससे पहले हुआ होगा 3.7 billion years ago, years before the present time. The expansion continues even to the present day, और जो और जो वो एक्सपेंशन है, जो एक्सप्लोड हुआ था, उसका जो एक्सपेंशन हुआ था, दैट इज कंटिन्यूड, वो आज भी हो रहा है. द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग इवन टुडे ऑल्सो. एज इट ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर, और जैसे जैसे जो एक्सपेंडेंट बढ़ता गया, एक्सपेंशन बढ़ता गया, सम एनर्जी, जो एनर्जी थी, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर, वह मैटर में कन्वर्ट होगी. एंड देयर वाज particularly rapid expansion within the fractions of the second after the Big Bang, and within a second, even in the half second, there was the rapid action. In the first second, जो Big Bang का पहला second था, in it expand, there was the rapid expansion. इसके अंदर it was rapid, बहुत ही जल्दी fast expansion हुआ था, and उसके बाद में the expansion has slowed down. उसके धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया, the expansion slowed down. जो expansion था, जो यूनिवर्स बढ़ रहा था, उसकी साइज जो बढ़ रही थी, पहले सेकंड में बहुत ही फास्ट रैपिड एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे वो स्लो डाउन होता गया. और अगर आफ्टर द फर्स्ट सेकंड, जो पहला सेकंड था, एंड विद इन द 3 मिनट्स, और जो टोटल 3 मिनट्स के टाइम पे द फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म. पहले जो फर्स्ट एटम था, वो पहले बिग बैंग के फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर बनना शुरू हो गया था. एंड विद इन द 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, और जो बिग बैंग थे 3 लाख साल में, मतलब बिग बैंग से 3 लाख साल में temperature dropped to the 44,500 Kelvin, or we can say it was almost 4,500 degrees Celsius. In the 3 lakh years, the temperature dropped to the
almost 4500 Kelvin and gave rise to the atomic matter. And we can imagine that how much was the temperature, और it was infinite, मीन्स जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते. तो बिग बैंग जो टाइनी बोलते हैं उसका इन्फिनिट टेम्परेचर था, और 3 लाख in the 3 lakh years it dropped to the 4500 Kelvin. And when the temperature dropped to the 4500 Kelvin, and the first it gave the rise to the एटॉमिक मैटर. जो एटॉमिक मैटर है वो उसका राइज हुआ, उसका बनना शुरू हुआ. एंड द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट. और उसके बाद में जब टेम्परेचर कम हुआ, एटॉमिक मैटर्स का बनना शुरू हुआ, तो टेम्परेचर द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बन गया. So this was the event of the Big Bang, which took place in the 3 stages. First, all the matter which is available in the universe today was in the form of the tiny ball, and that tiny ball has the unimaginable small volume, infinite temperature, and infinite density. And this event of the Big Bang took place almost 3.7 billion years ago. In the first second, or in the first second of the Big Bang, the speed of the expansion of the universe was very fast, and within the 3 minutes of the Big Bang, the first atom began to form. The first जो 3 minutes के अंदर first atom बना. And within the 3 lakh years from the Big Bang, the temperature of the atmosphere or the universe dropped to 4500 Kelvin, and the atomic matter came in existence. And after that, the universe became transparent, as today also the universe is transparent. And so now the expansion means the increase in space between the galaxies. और जो expansion है इसका मतलब है कि जो galaxies है उसके बीच का जो space है, जो उसके बीच की जो distance है वो बढ़ती जा रही है. Means it is increasing. And there is the one alternative to this. There is the alternative theory to this, that is the steady state. Polish concept of steady state. It considered the universe to be roughly the same at any point of time. और इसके जो Polish concept of the steady state है, इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमेशा सेम साइज का रहा है, किसी भी पॉइंट पे हमेशा सेम साइज का रहा है. लेकिन there are now the great evidences becoming available about the expanding universe. Scientific community at present favors the argument of एक्सपेंडिंग यूनिवर्स. लेकिन आज के टाइम पे जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है उसके एविडेंसेस मिलते जा रहे हैं. दैट्स व्हाई जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वह इसी को ही सपोर्ट करते हैं और इसी का फेवर में. सो दैट वाज द बिग बैंग theory of the formations of the universe. Thanks. Now next we will based on the Big Bang theory, we will study about the formation of the stars, formation of planets, satellites, and the elements of the universe. Thanks. Have a good day.